We are in the most auspicious midnight sandhya of the year. The midnight hour on the MahaShivRatri night is the most significant sandhya kala in the entire year. Sandhya means it's a time of transition. Nature is going through a certain phase of transition. This transition also allows us, the human creature, if willing, to transit from one dimension to another. As I said earlier, this is not some kind of a sorcery. All this fire, don't think some sorcery is being performed. This is a very fantastic science, an experiential science. The laboratory is not of human-made instruments, test tubes and conical flasks. The laboratory is the very universe itself. It's our privilege. Though we're such a small speck of a creature in this creation, still the creation has bestowed us with a sense of individuality which gives us the ability to experience life. It allows us the possibility that we can sit here and look at the universe as if it's separate from us. Though we are just a tiny drop in the entire making, this is a privilege we have. But there is a history on all levels of privileges being misused, privileges being abused. Well, that's human history. For a long time, we have begun to think that we are actually a separate existence by ourselves. So in this context, the seven sages, those who are today referred to as Saptarishis, who are the first disciples of Adiyogi, they asked, looked up at the empty, limitless sky, and they asked, how big is this cosmos? Where does it begin? Where does it end? How long would it take for us to travel from one end to another? Adiyogi laughed at their childish question and said, your entire cosmos, I can pack it into your mustard seed. That's some efficient packing, huh?
Then they were flabbergasted by this. How could somebody pack what is seemingly a limitless cosmos into a mustard seed? But when he said, I can pack it into a mustard seed, now they don't know whether this cosmos is big or small, so they pursued the same question in another vein. So they asked, if we have to master this universe, what do we have to do? What does it take for us? Same question, another way. By now he was bored with their questions. He simply said, 5. If you master these 5 elements, earth, water, fire, air and space or akash, just 5. If you master these 5 elements, you have mastered the whole cosmic space, that which is created and that which is yet to be created. Tamil. நாம் இருக்கிறோம். மகாசிவராத்திரியினுடைய இந்த நள்ளிரவாகிய हम अभी इस पूरे साल के सबसे पवित्र सांध्य काल में हैं। महाशिवरात्रि की रात होने वाली सांध्य काल पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण सांध्या होती है। सांध्या काल का मतलब है ये परिवर्तन का समय है। इस दौरान प्रकृति में कुछ बदलाव हो रहा है और ये बदलाव हमें मौका देता है कि अगर हम चाहें तो हम भी एक आयाम से दूसरे आयाम तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं। आप ये सब आग वाग देख के मत सोचिएगा कि यहाँ कोई जादू टोना चल रहा है। ये एक विज्ञान है, ये एक आंतरिक विज्ञान है। जब मैं कहता हूँ विज्ञान, तो यहाँ की प्रयोगशाला इंसानों की बनाई प्रयोगशालाओं जैसी नहीं है जहाँ पे टेस्ट ट्यूब वगैरह हों। पूरा अस्तित्व ही एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में हमें एक इंसान के रूप में पैदा होने का मौका मिला है। अभी हमारे इंसान के रूप में हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमें लगता है कि हम एक अलग इंसान हैं, हमारा एक अलग अस्तित्व है। हम यहाँ बैठकर पूरे अस्तित्व को ऐसे देख सकते हैं जैसे वो हमसे अलग हो। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा विशेषाधिकार है। लेकिन इंसानों का एक पूरा इतिहास भी है जहाँ लोगों ने खुद को मिले विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो हालांकि हम इस सृष्टि का ही हिस्सा हैं, लेकिन अभी हम यहाँ बैठ के ये मानने लग सकते हैं कि हम वास्तव में इस सृष्टि से अलग हैं। वो 7 ऋषि जो आदि योगी के सामने उनके पहले 7 शिष्यों के रूप में बैठे थे, उन्होंने जब आसमान की ओर देखा, उन्हें ये नहीं समझ आया कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है, इसका कहाँ शुरुआत होती है, कहाँ अंत होता है। तो उन्होंने आदि योगी से पूछा कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है, ये कहाँ शुरू होती, कहाँ खत्म होती है, सृष्टि के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कितना समय लगेगा। आदि योगी उनके बचकाने सवालों को देख के हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी इस सृष्टि को मैं एक सरसों के दाने में पैक कर सकता हूं। बहुत बढ़िया पैकिंग हुई है कि नहीं? ये 7 ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। इस सृष्टि को कोई एक सरसों के दाने में कैसे पैक कर सकता है? तो उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये सृष्टि वास्तव में बड़ी है या छोटी है, क्योंकि इसे सरसों के दाने में भी पैक किया जा सकता है। लेकिन उसी सवाल को उन्होंने एक दूसरे रूप से पूछने की सोची। उन्होंने आदि योगी से पूछा कि इस सृष्टि पे हम कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, कैसे हम इसको पूरी तरह से जान सकते हैं। आदि योगी उनके इन सवालों को सुनते सुनते बोर हो गए थे। उन्होंने बस अपना हाथ सामने करके 5 उंगलियां दिखाई। उन्होंने कहा 5, सिर्फ 5 तत्व, भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों पर अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो पूरी सृष्टि पर आपको महारत हासिल हो जाएगी। वो सृष्टि जिसकी रचना हो चुकी है और जिसकी रचना होना बाकी है, आप सब पे महारत हासिल कर लेंगे अगर आप बस इन 5 तत्वों पे महारत हासिल कर लेते हैं। நீர், நெருப்பு, காற்று,
படைத்தல் படைக்கப்பட்டவை இனி படைக்கப்பட போகிறவை அனைத்திலேயும் உங்களுக்கு ஒரு ஆளுமை வந்துவிடும் என்றார் ஆதியோகி. Today I thought I will reveal to you, people keep asking me, Sadhguru, we can see you're uneducated and obviously everybody knows that I don't have a moment to read or refer or consult. So they keep asking me, Sadhguru, where is all this coming from? Where is this knowledge from? So today I thought I will reveal the key. I will give away the key to this knowledge. The question is only, will you be awake enough to grab it when I throw it, or will you… Hello? Let me hear some life, huh? Because you must understand, sleep and death are brothers. They're not very different. You may be dying 6 to 8 hours a day which is 25 to 33% of the day one is dead. So one important dimension of yoga is to master sleep, because if one does not know how to stay awake, one will not know how to stay aware. So life is like this. Distracted life. In this state, one will not see anything except the most obvious that is necessary for survival. It is with keenness of attention that many doors in the universe can open. I would say, if your attention is keen enough, there is no door in the universe which will not open for you. So, a little while later, I will give away the key to you. Let me see how many… It's good, the echo is saying 3 times, how many? Very good. How many of you will you blossom into knowing? Because unfortunately, today's education systems have confused the hell out of you with a heap of information about everything. Information is not knowing. Information is useful for survival. Information is not useful for knowing, experiencing. So we are talking about a science which is experiential in nature, not informative. Because unless you experience something, it's not really true for you, it's just another story. You read a high school textbook, science textbook, and you think you know science. No, you're just believing a book. That's like religion, nothing scientific about it. Unless you know something experientially, it's not true for you. So I'm not talking about me giving you some information, I'm talking about a key. A key. Suppose I gave you a key, let's say you do not know the concept of lock and key, and I gave you a key, a small metal piece. You don't know what it is, you looked at it,
Maybe you put it in your ears and did this, you used it to scratch yourself, or you discarded it. Because a key is a useless thing unless you know how to put it into that specific hole and turn it in a particular way. Then it can open up a whole new world. So a key is a dimension. A key is a dimensional possibility. A key is not information. A key is not accumulation. Unfortunately, most people today have misunderstood accumulation of information as knowing. So in this context, when they asked how to grasp, how to master this cosmos, Adiyogi said 5. MahaShivRatri. Na means earth, Ma is water, Shi is fire. I think a lot of you know this, Shi is fire. Va is air, Ya is space. MahaShivRatri. He told them just 5 things. Just 5 things. Look at the mischief. Just with 5 things, how much has happened in creation? So, this is not through the straitjacket of logic. This is an order. This is a dimension, like a forest, not like a manicured garden. For one who looks at things superficially, a well-kept garden looks like order. Forest looks like chaos. But tell me, look at this little more profoundly. The forest has a perfect order. It has a perfect system of its own. Otherwise, it would not have lasted for 1,000,000 years or more. A garden, however well-designed garden it is, if you do not tend to it for a month, probably it's gone. So we are talking about a different dimension of order, like a forest, which on the surface looks chaotic, but is in perfect order. The very longevity says that it's in order, otherwise it wouldn't exist. I think the translations need to happen, I'm sorry. என்னிடம் பலர் கேட்பதுண்டு, சத்குரு நீங்கள் அதிகம் படித்ததும் இல்லை, பல விஷயங்களை புதிதாக கற்பதற்கோ ஆலோசனை செய்வதற்கோ आयु செய்வதற்கோ உங்களுக்கு சுத்தமாக। आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के सामने ये राज फाश करूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु हमें पता है कि आप अनएजुकेटेड हैं, आपने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, फिर आपको ये इतना सारा ज्ञान मिला कैसे? तो मैंने सोचा है, मैंने तय किया है कि इस ज्ञान की चाबी आज मैं आप लोगों की ओर उछालूंगा। अब सवाल ये है कि इस चाबी को कैच करने के लिए क्या आप लोग जागे रहेंगे? देखिए, नींद और मौत भाई भाई होते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे सोते हैं तो इसका मतलब है कि दिन में 25% समय आप मरे हुए हैं। योग का एक महत्वपूर्ण आयाम है नींद पर नियंत्रण हासिल करना, नींद पर महारत हासिल करना, क्योंकि अगर आप जागृत नहीं हैं तो आप जागरूक भी नहीं रह पाएंगे। जीवन बस यूं ही निकल जाएगा, यहाँ वहाँ आपका ध्यान भटकता रहेगा। केवल जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बिल्कुल ठीक आपकी आंखों के सामने खड़ी हैं, आपको केवल वही दिखाई देंगी, बाकी आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप सीखते हैं जागृत रहना, अपने ध्यान को केंद्रित रखना, तो इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे छुपी रह सके। तो आज ये चाबी मैं आपकी ओर फेंकने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद मैं ये चाबी आपकी ओर उछालने वाला हूँ। देखते हैं कि कितने लोग इस चाबी को हासिल कर पाते हैं। आज की शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी है जिसके कारण आप सभी के मन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए हैं, क्योंकि आपके मन में केवल जानकारियां ही जानकारियां भरी हुई हैं।
मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे विज्ञान की जो जानकारियों पे आधारित नहीं है। ये विज्ञान है अनुभव करने का विज्ञान। आप लोगों ने अपनी हाई स्कूल में जाके विज्ञान की किताबें पढ़ ली हैं और आपको लगता है कि आप विज्ञान जानते हैं। नहीं, आप विज्ञान नहीं जानते हैं। आपने केवल उस किताब में पढ़ी हुई बातों पे विश्वास कर रखा है। अगर आप सिर्फ पढ़ी हुई बातों पे विश्वास कर लेते हैं तो आप एक धार्मिक व्यक्ति की तरह हैं, एक अंधविश्वासी व्यक्ति की तरह हैं जो बिना अनुभव किए चीज़ों पे विश्वास करने लगता है। तो आज मैं आपको किसी तरह की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपको चाबी दूंगा। देखिए, मान लीजिए कि आपका ताले चाबी वगैरह से परिचय नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ये ताला चाबी आखिर होता क्या है। अगर मैं आपको एक चाबी देता हूँ, आपके लिए छोटा सा एक वो धातु का टुकड़ा होगा, आप उसे कान में घुसाने की कोशिश करेंगे, आप उससे अपने हाथ पैर खुजाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद आप उसे कहीं फेंक देंगे। लेकिन अगर आपको वास्तव में पता है कि चाबी क्या चीज़ है, अगर आप जानते हैं कि कैसे इसे उस खास छेद में घुसाया जाता है और कैसे इसे सही तरीके से घुमाया जाता है, तो ये चाबी आपके लिए एक बिल्कुल नया आयाम खोल सकती है। तो चाबी एक दूसरे आयाम में जाने की संभावना होती है। तो जब सप्तऋषियों ने आदियोगी से पूछा कि कैसे हम इस अस्तित्व को जान सकते हैं, कैसे हम इस सृष्टि में पूरी तरह से महारत हासिल कर सकते हैं, तो आदियोगी ने कहा 5, बस ये 5 तत्व हैं। न म शिवाय। न यानी कि धरती, म यानी कि जल, शी यानी कि अग्नि, वा यानी कि वायु और य यानी कि आकाश। उन्होंने कहा कि बस ये 5 तत्व, अगर तुम इन पे महारत हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी पूरी सृष्टि पे महारत होगी। जरा जादू तो देखिए, सिर्फ इन 5 चीजों से मिलाकर सृष्टि में कितना कुछ हुआ है। देखिए, ये सृष्टि तार्किकता में बंधी सीधी रेखा की तरह नहीं है, ये जंगल की तरह है। एक किसी लॉजिकल तरीके से सोचने वाले व्यक्ति को लगेगा कि एक गार्डन में, एक बगीचे में सब चीजें बड़ी व्यवस्थित होती हैं, जंगल एकदम अस्त व्यस्त होता है। लेकिन जरा गौर से देखिए, अगर आप एक जंगल पे गौर करें तो हजारों सालों से ये जंगल वैसा का वैसा रहा है। लेकिन अगर आपके घर का गार्डन या आपके ऑफिस का गार्डन, अगर उसका महीने भर ख्याल ना रखा जाए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो बताइए, ज्यादा व्यवस्था कहाँ है? तो हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की व्यवस्था की, जो बाहर से देखने में या दूर से देखने में तो बहुत अस्त व्यस्त लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो इसमें एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा कायम रहने वाली है। வ என்கிற எழுத்து காற்றை குறிக்கும், ய என்கிற எழுத்து ஆகாயத்தை குறிக்கும். எனவே இந்த 5 அம்சங்கள் தான், வெறும் 5 அம்சங்களை கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வளவு அற்புதங்கள் நிகழ்கின்றன என்று பாருங்கள். எனவே இந்த 5ம் உங்கள் தர்க்க அறிவுக்குள் உட்பட்டு வரக்கூடிய எல்லைகள் அல்ல. நீங்கள் ஒரு தோட்டத்தை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் அந்த தோட்டம் என்னவோ ரொம்ப ஒழுங்காக இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்கள். ஒரு வனம் என்பது, ஒரு காடு என்பது உங்களை குழப்புகிறது என்று நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒழுங்கு என்பது செயற்கையானது. அது சில ஆண்டுகள் மட்டும்தான் நீடிக்கிறது. ஆனால் ஒரு காட்டுக்குள் அடிப்படையிலே இருக்கக்கூடிய ஒழுங்கு இருக்கிறதே, அது லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அந்த காட்டை நிலை பெற்று வைத்திருக்கிறது. எனவே வெளிப்படையாக பார்க்கிற போது, மேலோட்டமாக பார்க்கிற போது ஒரு தோட்டம் ஒழுங்குவானது போல் தோன்றுகிறது. ஆனால் ஒரு காட்டுக்குள், ஒரு வனத்துக்குள் இருக்கிற ஆதி ஒழுங்கு, அடிப்படை ஒழுங்கு மிக மிக மகத்தானது. அது குழப்பம் அல்ல, அது ஆழ்ந்த புரிதலுக்கு உட்பட்டது. Adiyogi, when he referred to MahaShivRatri, he's talking about mantra. Mantra is that dimension of sound which is mathematically perfect. Music is melodious when it's mathematically correct, but music has invested too much into aesthetics. But a mantra is not about aesthetics, it's pure mathematics. There are school children here.
I think I'm hearing they're saying, Sadhguru, once again if you say mathematics, we'll fall asleep right here. Well, I'm not talking about that kind of mathematics, not about 2 plus 2, A plus B equals C, not that kind of mathematics. I'm talking about a mathematics that doesn't have equations of simple logic. I'm talking about mathematics which has brought order to this seemingly chaotic cosmos. So Adiyogi chooses to offer this in different ways to different people. Well, he was different things to different people, always. You have definitely, even in the calendar images, seen Adiyogi as a yogi, of course. But he is a hunter for the hunters, a farmer for the farmers, and of course a dancer. This is the only culture where our gods dance. I cannot come to terms with a god who cannot dance. Huh? So he offers the same possibility in 3 different ways to the 7 sages, the Saptarishis. He talks about elaborate science. He propounds various theories and dimensions, 112 methodologies, elaborate systems, 112 systems. That is why here, symbolically, Adiyogi is standing up 112 feet tall. Anyway, I want to inform you, today the tourism department, the Ministry of Tourism of Government of India has recognized Adiyogi as a part of Incredible India site. Incredible, isn't he? So, Adiyogi offers it in 3 different dimensions. To the 7 sages, he expounds a profound science with 112 different dimensions and systems. In fact, the 7 sages actually ask Adiyogi, do we need so many systems? After all, human beings are human beings. Just a few systems, maybe 3, maybe 10, maybe 12 would be enough. 112. Do we need this many systems? Do we need to master this many? Do we need to know this many? So Adiyogi said, right now, you may not be able to recognize this. As human intellect evolves, and this is fantastic that he says, when a time comes when there is no work on a man's hands, when that time comes, 112 methods will become necessary because human mind will take on every possible form that it can. He's talking about today's age, the age of technology, when men's hands have no physical work. See how many of you become slowly like the globe? Because there is no work on the hand. 15,000 years ago, he talks about a time where time will come when men will have no work on their hands. At that time, their mind will take on so many formations that you will need all these methods.
So he goes about with the seven sages with extreme sense of mathematics and logic. Then in between, Parvati asks questions. He smiles at her and says, "The Divine One, you don't bother about these things." She feels insulted, so she thinks he is trying to avoid her because she doesn't have the necessary intellect like the seven sages. So she says, "No, there must be more. There must be more ways than 112. So look at this, the men are looking at, why 112? Can't we make it simpler? But the women like variety. She says, why only 112? Why can't there be more? And Adiyogi says, no, there aren't any more, there are only 112, just leave it. She feels insulted. In front of these people, you kind of brushing me aside. So she says, I will go and find more ways than 112. Adiyogi says, do what you want. She goes away for a long period of time into severe austerity. But Adiyogi continues with the seven people, and after a long period she comes back. And she comes and sits one step below him. The teaching is still going on because this is a scientific exposition, it goes on and on. But she comes and sits one step below. She's his wife, she can come and sit here. But she sits one step below just to indicate she wants only him to know, she does not want others to know. A beautiful imagery of that on the screen. She does not want these seven guys to know that she has failed, but she wants him to know. So she sits one step below. And this exposition goes on. Then in between, Parvati asks one more question. Shiva looks at her with a deep sense of intimacy and says, sweet one, you don't bother about that, come sit here. So she again resists. She thinks that he is trying to treat her in a patriarchal way. Oh, just sit on my lap, don't worry about all that. Man's trick. He shakes his head, that's not it, come and sit here. When she comes and sits here, he just pulls her in and she fills one half of him. That's how he became an Ardhanari. He just included her. In that inclusion, she knew everything that he knows. But the seven sages were still learning, but she realized everything out of simple inclusion. He just made her one half of himself. The seven sages are getting a scientific exposition, she just gets included in a moment and she realizes all his buddies, the Ganas, they are distorted, demented beings, they don't have human form. So human beings around thought these are some crazy creatures. So they looked at this, these guys seem to be learning something, Parvati seems to be in ecstasy. They said, what about us? He said, you don't bother about this. So he said, just drink me, that's all. You guys don't bother about enlightenment, knowledge, self-realization, nonsense, this is not for you. You just drink off me, everything will be fine. So they just got drunk on him.
When the Saptarishis asked, what is enlightenment, where is it? He gave them an elaborate path. He created a distance which they had to walk. When Parvati asked, what is enlightenment? He said, it's right here. There's no distance to walk, there is no pathway. It's just inclusion, right here. When the Ganas asked, we want to know enlightenment, he laughed and said, there is no such thing as enlightenment. Tamil. நமசிவாய எனும் ஐந்தெழுத்து பற்றி ஆதியோகி சொல்கிற போது आदि योगी ने जब नमः शिवाय की बात की तो वे एक मंत्र की बात कर रहे थे। मंत्र का अर्थ है कि ये ध्वनि का वह आयाम है जो गणितीय रूप से बिल्कुल सटीक है, यानी मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम संगीत की बात करते हैं तो ये ध्वनियों का एक ऐसा आयाम है या एक ऐसा मिश्रण है जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज किया गया है। लेकिन ध्वनियों का यह अरेंजमेंट जब मैथमेटिकली परफेक्ट यानी गणितीय रूप से बिल्कुल सटीक हो जाता है तो हम इसे एक मंत्र कहते हैं। जब मैं कहता हूँ गणित, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सदगुरु गणित की बात मत कीजिए वरना हमें नींद आने लगेगी। तो मैं उस तरह के गणित की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें a+b=c के बारे में बात होती है। मैं गणित के उस आयाम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने इस पूरी सृष्टि को व्यवस्था दी है, जिसने इस पूरी सृष्टि को व्यवस्थित किया है। आदि योगी ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीकों से अपना अनुभव प्रदान किया या यह ज्ञान प्रदान किया। आदि योगी को अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से देखते हैं। यहाँ तक कि आपके कैलेंडर में बने चित्रों में भी आपने हमेशा आदि योगी को एक योगी की तरह बैठे हुए देखा, लेकिन साथ ही साथ वो एक शिकारी भी थे, वो एक किसान भी थे। किसान उनको एक किसान की तरह देखते हैं और हाँ, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे नर्तक भी थे। हमारी संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ हमारे भगवान नाचते हैं। मैं किसी ऐसे भगवान को नहीं सह सकता जो नाच ना सकता हो। तो आदि योगी ने जब सप्त ऋषियों को ये ज्ञान प्रदान किया तो उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान के रूप में ये ज्ञान उन तक पहुंचाया। उन्होंने 112 मार्ग बताए, 112 तरीके बताए जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक बहुत ही विस्तृत मार्ग और साधनाएं बनाई। यहाँ ईशा योग केंद्र में जो आदि योगी का चेहरा है वो 112 फुट ऊंचा है। ये उन 112 तरीकों का प्रतीक है जो आदि योगी ने मानवता को भेंट किए थे। और आज के दिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन मंत्रालय ने आदि योगी के इस चेहरे को इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत का एक हिस्सा माना है और इसे उनकी वेबसाइट में इंक्लूड किया है। वास्तव में ये चेहरा अतुल्य है, शानदार है कि नहीं? இந்த வழிகளை 112 வழிகளை சப்தரிஷிகளுக்கு ஆதியோகி சொல்லுகிற போது तो आदि योगी ने 3 अलग अलग आयामों में ये ज्ञान इंसानों तक पहुंचाया। सप्त ऋषियों को उन्होंने 112 तरीके सिखाए, विज्ञान की गहराइयों तक वो उनको लेके गए। सप्त ऋषियों ने आदि योगी से पूछा, क्या वास्तव में हमें इतने सारे तरीकों की जरूरत है? क्या हम 3 तरीके नहीं सीख सकते? भाई इंसान तो आखिर कुछ ही है इस धरती पे। 3 तरीके, 10 तरीके, 12 तरीके काफी होंगे। 112 तरीकों की क्या जरूरत है? क्या हमें इतने सारे सीखने होंगे? तो आदि योगी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि 112 तरीकों का क्या महत्व है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इंसान के हाथों में ज्यादा काम नहीं होगा। उस समय उसका मन बहुत सारे रूप लेने लगेगा। देखिए, उन्होंने उस समय आज आप लोगों के बारे में बात की थी। आज आप लोगों के हाथ में ज्यादा काम कहाँ बचा है, इसीलिए धीरे धीरे आप में से कुछ लोगों का शरीर ग्लोब के आकार में आने लगा है। तो आदि योगी ने 15,000 साल पहले ये बात कही थी कि एक ऐसा समय आएगा जब इंसानों के हाथों में ज्यादा काम नहीं बचा होगा, तब उनका मन अलग अलग तरह के रूप लेने लगेगा। ऐसे समय में 112 तरीकों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से इस गणित को, इस विज्ञान को पूरी गहराई में जाके इन सप्त ऋषियों को सिखाया और इसकी बहुत विस्तार में व्याख्या की।
जब पार्वती ने देखा कि ये सप्तऋषि आदि योगी से इस ज्ञान को इतनी गहराई में और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, तो वो जाके आदि योगी से पूछती हैं कि आप मुझे भी कुछ सिखाइए, मुझे भी कुछ बताइए, आप इन लोगों को क्या बता रहे हैं। आदि योगी ने बहुत प्यार से उनकी ओर देखा और कहा, मेरी प्यारी, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पार्वती को लगा कि आदि योगी उनको अयोग्य समझते हैं, कि शायद उनकी बुद्धि उतनी तेज नहीं हो, इन बातों को नहीं समझ पाएंगी। तो पार्वती ने फिर उनसे पूछा, आप क्यों नहीं मुझे सिखा रहे, और क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ 112 तरीके हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। आदि योगी ने बिना ध्यान उनकी ओर दिए कहा, नहीं, और तरीके नहीं हैं। तो पार्वती ने कहा, नहीं, और भी तरीके होंगे, निश्चित रूप से होंगे, मैं जाके ढूंढूंगी। आदि योगी ने कहा, ठीक है, जाओ ढूंढो। पार्वती वहां से चली गई और लंबे समय तक उन्होंने साधना की। आदि योगी इस दौरान भी सप्तऋषियों के साथ लगे रहे और उन्हें ज्ञान की गहराइयों में ले जा रहे थे वो। फिर एक लंबे समय के बाद पार्वती वापस आई और आके वो आदि योगी से एक कदम नीचे की सीढ़ी में बैठ गईं। देखिए, एक पत्नी होने के नाते वो उनके बगल में उनके साथ बैठ सकती थी, लेकिन वो उनसे नीचे बैठी क्योंकि वो सिर्फ उन्हें बताना चाहती थी कि वो असफल रही हैं। वो बाकी लोगों के सामने ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इन 7 लोगों को पता चले कि वो हार गईं, लेकिन वो आदि योगी के सामने ये स्वीकार करना चाहती थी कि वो असफल रहीं। आप स्क्रीन पे एक बहुत ही खूबसूरत चित्र देख सकते हैं जो इस घटना को दिखा रहा है। उन्होंने लंबे समय की साधना के बाद ये एहसास किया कि वास्तव में सिर्फ 112 तरीके ही हैं। फिर पार्वती ने और सवाल पूछे आदि योगी से कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आदि योगी शिव बहुत प्यार से उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम उन चीजों की चिंता मत करो, बस आके मेरी गोद में बैठ जाओ। पार्वती ने थोड़ा सा प्रतिरोध किया। उनको बड़ा अजीब लगा कि मैं इनसे ज्ञान की बात कर रही हूँ और ये मेरे को अपने पास बुला के अपनी गोद में बिठा रहे हैं। लेकिन आदि योगी ने कहा, नहीं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, तुम आओ। बहुत प्यार से उन्होंने कहा, तुम आओ और मेरी गोद में बैठो। जब आके वो उनकी गोद में बैठी तो आदि योगी ने उन्हें अपने हाथ से खींचा और अपने अंदर शामिल कर लिया और उनका आधा शरीर पार्वती का बन गया और इस समय वो अर्धनारीश्वर कहलाए। उस एक रूपता के उस पल में पार्वती ने वो सब कुछ जान लिया, वो सब कुछ अनुभव कर लिया जो आदि योगी ने अनुभव किया था। तो सप्तऋषियों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आदि योगी ने ये चीजें बताई। पार्वती को बस एक ही पल में अपना एक हिस्सा बना के उन्होंने अनुभव प्रदान किया। लेकिन आदि योगी के जो दूसरे साथी थे, जो वहाँ पे गण थे जिन्हें हम विकृत भूत प्रेत मानते हैं, उनको देख के अजीब लगा। उन्हें लगा कि इन 7 लोगों को आदि योगी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सिखा रहे हैं। पार्वती भी उनके साथ एक होकर आनंद मग्न हो गई हैं, हमारा क्या होगा। आदि योगी ने कहा, अरे तुम लोग इन सब चीज़ों की चिंता मत करो, तुम लोग बस यहाँ बैठ के मुझे पियो। तो उन लोगों ने आदि योगी को पीना शुरू कर दिया और पूरी तरह से धुत हो गए। तो ये 3 अलग अलग आयाम हैं जिनमें आदि योगी ने अपनी शिक्षा दी, ये अनुभव लोगों को प्रदान किया। जब सप्तऋषियों ने उनसे पूछा कि आत्मज्ञान क्या है, कहाँ है, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आदि योगी ने एक विस्तृत मार्ग उनके लिए बनाया, एक दूरी बताई जिन्हें उन्हें तय करनी होगी। पार्वती से उन्होंने कहा, आत्मज्ञान यही है, कोई दूरी नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, आओ। और गाणा से उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी।
उजाला योग वाला, नाड़ियों में रक्त झूमे योग वाला, योग वाली जोत ने अब जाल लोगे, सत्य खुलता जा रहा है योग वाला, कह रही है सब दिशाएं योग वाला, मगन जीवन सांस शाश्वत, प्राण गुंजन गगन उतर मुझ में आदि योग, योग धारा चरक छन छन सांस शाश्वत, प्राण गुंजन उतरे मुझ में आदि योग, उतरे मुझ में आदि योगी। अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारे, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, उतरे मुझ में आदि योग, योग धारा चरक छन छन सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन धनन, उतरे मुझ में आदि योग, उतरे मुझ में आदि योग, उतरे मुझ में आदि योगी। Forever, this has been a land of debate, of questions, never of commandments, especially when entities considered divine appeared. People saw it as a possibility to raise questions, to bring clarity, not to settle for a confidence that is bred out of belief. This is not about getting to a falsehood of certainty that one assumes with belief. This is about celebrating our uncertainty. This is about working for clarity, not for blind confidence. Our past is animal nature. If we become conscious enough to stay in the present, we become human. Very easily we can slip back into animal nature. Those of you just falling asleep, I'm reminding you, you just slipping back, that
whether your eyes are open or closed is no more a conscious process. It just happens by itself. No. It's important that we remember that we have evolved out of animal nature. This is the time to enjoy our human nature, and this is only possible if we are conscious and in the present. If we want to be in the present, we have to be conscious. But the future is beckoning. Divine nature is beckoning us in future. This means the possibility of evolving beyond the dimensions or definitions of what we consider as human is right here for every one of us. The question is only, will we step forward or will we step backwards? Will we move into our divine possibility or will we step back into our animal past? This is a constant challenge, this is a constant possibility that human beings are struggling with. This is a night of wakefulness. Jagaran means not just wakefulness, means a night of awakening. If this is your night of awakening, we must step forward into the divine possibility, not backwards into our animal past. நாம் பல கேள்விகளையும் விவாதங்களையும் எழுப்புகிற ஒரு மரபிலே வந்திருக்கிறோம். हमारा देश, ये धरती, ये हमेशा से वाद विवाद की धरती रही है, सवालों की धरती रही है। हमने कभी भी किसी के बताए नियमों के हिसाब से अपना जीवन नहीं जिया है। यहाँ तक कि जब ऐसे लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता था, फिर भी उनसे भी हमने सवाल पूछे। हमने उनकी मौजूदगी को सवाल पूछने के मौके के रूप में देखा, ताकि हम उनसे सवाल पूछ के अपनी सारी उलझनों को सुलझा सकें, ताकि हम स्पष्टता को प्राप्त कर सकें। तो ये एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे किसी भी चीज़ को हमने तय नहीं किया। देखिए, जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि हर चीज़ सब कुछ पहले से तय है, तो जीवन बड़ा स्थिरता सी उसमें महसूस होती है, लेकिन सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। हमारा अतीत पशु प्रकृति है। इस पशु प्रकृति से हमने विकास किया और अभी हम मनुष्य के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम जागरूक हैं कि अभी हम इस क्षण में हैं, तो हम अपनी मनुष्य प्रकृति में रहेंगे। हम पशु प्रकृति से विकसित हुए हैं। अब समय आ गया है कि हम जागरूक रहें और अपने मानव होने के अस्तित्व का आनंद लें, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक रहना होगा, आपको जागृत रहना होगा। आप में से जिन लोगों को नींद के झोंके आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को जागृत रहना होगा। हम अपनी पशु प्रकृति से आए हैं, हमारा अतीत पशु प्रकृति है। अभी हम मानव के रूप में यहाँ जीवित हैं, लेकिन एक और आयाम हमारे अंदर मौजूद है जो कि है दैवीय प्रकृति का। वो हमारा भविष्य है जो हमें लगातार पुकार रहा है। अब सवाल ये है कि आप आगे कदम बढ़ा के अपनी दैवीय प्रकृति की ओर जाएंगे या पीछे कदम बढ़ाकर वापस अपनी पशु प्रकृति की ओर चले जाएंगे। ये एक ऐसी जद्दोजहद है जिससे लगातार इंसान उलझन में पड़ा रहता है, हमेशा इस जद्दोजहद के साथ जूझता रहता है। तो आज की रात आपके लिए मौका है आगे कदम बढ़ाने की। रात्रि जागरण का मतलब है कि ये मौका है आपके चैतन्य की जागृति का। तो क्या आज आप आगे कदम बढ़ाएंगे और अपने दैवत्व की ओर जाएंगे या पीछे कदम बढ़ा के पशु प्रकृति की ओर जाएंगे? This is not all about an intense being, stillness, dancing, science, mathematics. He is also bhole. So are his disciples or his devotees. There are many beautiful stories about how
his devotees, transcended everything out of absolute innocence and simplicity. In Tamil Nadu, I think nobody would have not heard of Pusalar, the great sage of the past, a devotee. Pusalar was a very poor man living in a small hut in the outskirts of the town. The king, the great king, built a very elaborate temple which took him many years and much money. He had completed the temple and the next day was inauguration of this great temple that he had built. That night, Shiva appeared in his dream and said, "I know you have built a wonderful temple for me, but I will not be able to come for the inauguration of your temple because I am going to Pusalar's temple. Pusalar also has built another temple, I need to go there, I won't be able to come to your temple." The king was aghast, he sat up in his sleep, shocked. Early morning he started off wanting to look for this Pusalar, where is he? Who is this man who's built a better temple than me? I am the king here. So he went looking and then he went into the poorest segment of the city and then found a small dilapidated hut and he called out, "Who is Pusalar here?" A very skinny, barely clothed man came out terrified. "I am Pusalar, why, what's wrong?" "Oh, my king, why have you come to my house?" Then the king said, "I have built a great temple, you know that, but Shiva appeared in my dream and said, he is coming to your temple, not to my temple. Where is your temple? Where have you built?" Pusalar was a bit embarrassed. He said, "Oh, my king, where will a poor man like me build a temple? I just built a temple in my heart. It took many years, brick by brick, stone by stone, slowly I built this temple. It took me a long time, but my temple is just complete." And Shiva said he will come to my temple tomorrow. So this year everybody's been asking me, "Sadhguru, last time our Prime Minister came for MahaShivRatri, this time who is coming?" I told them, "Adiyogi is coming." I invited him and he's accepted the invitation. Not because we built up a big image of him here. I'm sure he's not impressed by this image, not am I. But we built a wonderful temple in our heart. He cannot ignore that, he has to be here. तो जब हम आदि योगी के बारे में बात करते हैं, आदि योगी उन्होंने केवल गणित नहीं सिखाया, विज्ञान नहीं सिखाया, ना ही उन्हें केवल आग ही पसंद आती है, साथ ही साथ वे भोलेनाथ भी हैं और उनके भक्त भी है, उनकी तरह भोले ही हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें ये दर्शाया गया है कि कैसे उनके भक्तों ने अपनी सरलता से, अपनी सहजता से अपनी सारी सीमाएं पार कर ली थीं। तमिलनाडु में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने पूसलार के बारे में न सुना हो।
वे एक बहुत ही गरीब व्यक्ति थे और एक झोपड़ी में रहा करते थे। उस राज्य का राजा एक बहुत महान राजा था और उसने शिव के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। बहुत सारा पैसा और सामान लगाकर उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण किया। अगले दिन उसकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उस मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। उस रात जब वो राजा सोने के लिए गए तो शिव खुद उनके सपने में आए और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए एक बहुत ही शानदार मंदिर बनाया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कल तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकता, क्योंकि कल मुझे पूसलार के मंदिर में जाना है। उन्होंने भी मेरे लिए मंदिर बनाया है और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं कल उनके मंदिर में जाऊंगा। राजा एक झटके के साथ नींद से उठ गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि शिव खुद उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पूसलार के मंदिर में जाना है। तो ये राजा पूसलार की खोज में निकल पड़े। ये खोज उन्हें शहर के सबसे गरीब इलाके में लेके गई। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहाँ जाकर उन्होंने पूछा, क्या यहाँ पूसलार रहते हैं? पूसलार बाहर आए और वो राजा को देख के घबरा गए, क्योंकि वो एक गरीब आदमी थे और एक राजा उनकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। उन्होंने पूछा, ओ महाराज, आप यहाँ कैसे? राजा ने पूछा, क्या आप ही पूसलार हैं? पूसलार ने कहा, हाँ, मेरा ही नाम पूसलार है। राजा ने कहा, आपका मंदिर कहाँ है? मैंने सुना है कि आपने शिव के लिए एक बड़ा शानदार मंदिर बनाया है, कहाँ है वो मंदिर? पूसलार शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे जैसा गरीब आदमी का क्या मंदिर बनाएगा? ये मंदिर जो मैंने बनाया है ये मिट्टी या पत्थरों का या ईंटों का नहीं है। इस मंदिर को मैंने अपने दिल में बनाया है। इस मंदिर को बनाने में मुझे एक लंबा समय लग गया, कई साल लग गए। एक एक पत्थर, एक एक लीड लगा के मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है। और हाँ, ये सच है कि शिव ने मुझसे वादा किया है कि कल वो मेरे मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो इस बार महाशिवरात्रि के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि सदगुरु, पिछले साल जब महाशिवरात्रि हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पे आए थे, इस बार महाशिवरात्रि में कौन आने वाला है? तो मैंने सभी से कहा कि इस बार महाशिवरात्रि में खुद आदि योगी आने वाले हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया है, उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उनका एक इतना बड़ा यहाँ पे चेहरा बनाया, वो इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते, ना ही मैं इन चीज़ों से इम्प्रेस होता हूँ, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लंबे समय पहले हमने अपने दिल में एक ऐसा मंदिर बनाया है, एक ऐसा शानदार मंदिर बनाया है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते। उन्हें आना ही होगा।
On a certain day, a Gnana Yogi means one who employs his intellect as the basic tool of knowing. He came to Adiyogi and said, I very much appreciate the many things that you have expounded. Sounds very scientific, logically correct, but a whole lot of your devotees are always shouting your name, Shambho, Shiva, and going around doing crazy things. How do you allow these people, these crazy people who'll simply shout Shiva, Shambho and jump around? What kind of science is that? You should not allow these things. So Adiyogi said, see here, do you see that little worm crawling? Just go near the worm and say, Shiva Shambho. Well, why not? And went to the worm and said, Shiva Shambho. The worm just fell dead right there. The Gnana Yogi was shocked. The mantra kills. Yes, it does. What is the purpose of this? I utter the mantra and the poor creature dies. The Adiyogi said, leave that. Here, a butterfly. See, butterfly. Say Shiva Shambho to that. But he was hesitant now. I don't want to kill a butterfly. Doesn't matter, say Shiva Shambho to butterfly. He said, Shiva Shambho, poof, the butterfly died. Then now he was aghast, what is this? What is the point of this kind of mantra? This looks like a gun, Shiva Shambho, boom, they're dead. Then a young fawn, a young deer was romping around. Adiyogi said, look at the deer and say Shiva Shambho. Said, no, I'm not going to do this. Adiyogi said, just do it. He said, Shiva Shambho. The deer fell dead right there. Just then, a couple came with a little infant in their hand for blessing. Adiyogi looked at the little child and said, say Shiva Shambho to this child. He said, no way, you're not going to make me do that. I am not going to kill this child. Just then, this little infant sat up and spoke, I was a worm, you uttered the mantra, I became a butterfly, you uttered the mantra, I became a deer, you uttered the mantra, I've become human, please say it, let me become divine. The foundation, the key for everything that I am and everything that happens in the name of Isha is just this one sound, this one mantra. I'm talking about a key. Hello, those of you, they're walking around people, you must sit down, we were going to do something now. Everybody sit down, ellaru ukkandukonom. நான் எல்லா அறிவுக்கும் மூலமான சாவி கொடுக்க போறேன்னா நீங்க போண்டா சாப்பிட்டு போறீங்களா எப்படி? எல்லாம் உட்காருங்க அப்படி. Please sit down. அங்கே போண்டா சாப்பிடுறவங்க அங்கே உட்காந்துடலாம் அப்படியே. ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் உங்க சேருக்கு வர்றதுக்கு. எங்கெங்க இருந்தா அங்கே உட்காந்துடலாம். Please sit down wherever you are.
We'll do a simple thing, very simple thing, but this will start a new process in your life. This is the key. As I said, key is a phenomenal instrument only if you know how to use it, otherwise it's just a piece of metal. So is a mantra. Today modern science is beginning to recognize that the entire universe is just a reverberation of energy. Where there is a vibration, there is bound to be a sound. So, universe is a complex amalgamation of sounds. In this web, an enormous, limitless web of sounds, a few key sounds have been identified, which we refer to as mantra. It's very important that the mantra, a specific mantra, goes into the right keyhole and you turn it the right way. Any number of times I see people doing this. You give them a key, they do not know which way to turn it, they'll do this way, this way, this way, this way. It's not going to work like that. You have to turn it in a specific way, depending upon the nature of the lock, depending upon the nature of that dimension, accordingly it works. So, we will do this mantra in a particular way. I want you to listen to the instructions carefully. Before that, the translation, please. ஆதியோகியை பார்ப்பதற்கு ஞான மார்க்கத்திலே போகக்கூடிய ஒருவர் வந்தார். அவர் அறிவை பயன்படுத்தி एक दिन आदियोगी के पास उनसे मिलने के लिए एक ज्ञान योगी पहुंचे। ज्ञान योगी का अर्थ है जो अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता का प्रयोग करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस ज्ञान योगी ने आके आदियोगी से पूछा कि मैं आपकी बहुत सारी बातों का बहुत आदर करता हूँ, आप हर चीज़ को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से, गणितीय व्याख्या के साथ समझाते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे भक्त हर समय शिव शंभू कहते रहते हैं, अजीब अजीब चिल्लाते रहते हैं। आप क्यों इन लोगों को ये सब कहने की अनुमति देते हैं? आपको इन लोगों को ये सब बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आदि योगी ने उन्हें देखा और कहा, उन्होंने उनके आसपास एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटी सी इल्ली चल रही थी, तो आदि योगी ने उस इल्ली की ओर इशारा करके ज्ञान योगी से कहा, आप बस जरा इस इल्ली के करीब जाइए और उसके करीब जाके शिव शंभो कहिए। योगी ने कहा, ठीक है, क्या बड़ी बात है, कर देते हैं। उन्होंने जाके इल्ली के पास शिव शंभो कहा, वो इल्ली वहीं मर गई। ये ज्ञान योगी सत्ते में आ गए। ये कैसा मंत्र है? ये मंत्र तो हत्या कर देता है। हाँ, तो इस मंत्र का क्या उद्देश्य है? आदि योगी ने कहा, वो सब छोड़ो, देखो ये तितली उड़ रही ना, बस इस तितली की ओर देखो और देखते हुए कहो शिव शंभो। उस योगी ने कहा, नहीं, मैं नहीं कहूँगा। आदि योगी ने कहा, कोई बात नहीं, कहो। तितली की ओर देखते हुए ज्ञान योगी ने कहा, शिव शंभो। वो तितली वहीं मर के जमीन पे गिर पड़ी। ये ज्ञान योगी सत्ते में आ गए। ये क्या है? ये शिव शंभु मंत्र तो बंदूक की तरह है, जैसे ही बोलो कोई ना कोई मर जाता है। उसी समय वहां एक हिरण का छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया। आदि योगी ने कहा कि इस हिरण के बच्चे को देख के शिव शंभु कहो। ज्ञान योगी ने कहा, मैं नहीं कहने वाला, आप चाहे कुछ कहें, मैं इस मंत्र को अब नहीं कहूंगा। आदि योगी ने कहा, बोलो। ज्ञान योगी ने कहा, शिव शंभो, और हिरण का बच्चा वहीं मर गया। थोड़ी ही देर में एक पुरुष और स्त्री एक छोटे से बच्चे को आदि योगी के पास लेके आए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आदि योगी ने कहा कि इस बच्चे को देखो और कहो शिव शंभो। ज्ञान योगी ने कहा, सवाल ही नहीं उठता, मैं इस बच्चे की हत्या नहीं करूंगा, मैं इस मंत्र का उच्चारण नहीं करूंगा। उसी समय वो नवजात बच्चा उठ के बैठ गया और उसने कहा, मैं एक छोटी सी इल्ली था, आपने शिव शंभु कहा, मैं एक तितली बन गया। आपने शिव शंभु कहा, मैं मर गया और फिर मैंने जन्म लिया एक हिरण की तरह। आपने शिव शंभु कहा, मैं मर गया और मैंने जन्म लिया एक इंसान की तरह। एक बार फिर से शिव शंभु कह दीजिए, मैं दैवत्व को प्राप्त कर लूंगा। तो मैं जो कुछ भी हूं उसका आधार बस यही है, उसकी चाबी इसी में है। केवल वो मैं जो हूं और ईशा में जो कुछ भी होता है, हर उस चीज की चाबी
बस इस एक मंत्र में है। तो मैं चाबी की बात कर रहा हूं। आप में से जो लोग यहां वहां चल फिर रहे हैं, आप बैठिए। मैं आपको उस चाबी की बात कर रहा हूं जिससे आप इस सृष्टि में होने वाली हर चीज को जान सकते हैं। तो ये जाके पकौड़े खाने का समय नहीं है। आप चाहे जहां भी हैं वहीं बैठ जाइए। हम एक बहुत ही सरल सी चीज करेंगे। यह आपके जीवन में एक नई प्रक्रिया शुरू कर सकती है। देखिए, ये जो चाबी है, अगर आप इसका उपयोग करना जानते हैं तो आपके जीवन में एक नया आयाम खोल सकती है। ये चाबी एक मंत्र है। आधुनिक विज्ञान आज हमें बता रहा है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि एक कंपन है। जहां कहीं भी कंपन है वहां ध्वनि निश्चित रूप से मौजूद होगी। Stand where you are. You can even doing this. You can even do this standing. यार நடந்து போறீங்க அங்கங்க நின்னு आप खड़े खड़े भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप जहां भी हैं बस वहीं स्थिर हो जाएं। इस प्रक्रिया के निर्देशों को ध्यान से सुने। इस ध्वनि का आपको एक खास तरीके से प्रयोग करना होगा। अपने बाएं हाथ को हथेली को ऊपर की ओर करके रखें। आप में से जो लोग बैठे हुए हैं, without any tension, just loose. You must imagine that your hand or your arm is like a rope. In the earth kai. अपने बाएं हाथ को बिल्कुल ढीला रखें, जैसे कि वो एक रस्सी या सुतली की तरह वहां पे पड़ा हो। हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। बाएं हाथ को बिल्कुल ढीला रखें। Take your right hand, use any finger. You can just block your right nostril. Don't do it yet, just listen to me. You block your right nostril and inhale fully, forcefully like that, and all the air that you have gathered with the inhalation should go out with one sound, like this. Shambho. Shambho. नाम आपका बायां हाथ आपको खुला रखना है। अपना दायां हाथ लेकर अपने दाएं हाथ की किसी भी उंगली का प्रयोग कीजिए और अपनी दाईं नासिका को बंद कीजिए और बाईं नासिका से पूरी तरह से तेजी के साथ सांस अंदर लीजिए। और जितनी सांस आपने अपनी फेफड़ों में भरी है, बस एक बार शंभु कहते हुए वो पूरी सांस आपको बाहर छोड़ देनी है। आप दाहिने नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका से पूरी तरह से सांस अंदर लीजिए और शंभु कहते हुए एक ही झटके में पूरी की पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। जरा सा ऊपर उठे चेहरे के साथ बैठिए। आंखें बंद कीजिए। चेहरा जरा सा ऊपर उठा हुआ। अपनी दाईं नासिका को बंद कीजिए। Take a full breath. एक गहरी सांस अंदर लीजिए। Shambhu. 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 Shambhu.
Just sit still. Keep your eyes closed. Just sit still. அப்படியே கண்ணு மூடி அசைவில்லாம உட்காரணும். बिल्कुल स्थिर होके बैठिए, आंखें बंद रखिए, बिल्कुल स्थिर होके बैठिए. Keep your eyes closed and just sit still, unmoving. Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Shambho
Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho. Slowly, very slowly, please open your eyes. எல்லாருமே மெதுவா கண் திறக்கலாம். धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए.